अगर मेंटालिटी ग्रोथ के बारे में पूछें तो मेरी फैमिली हर चीज़ के लिए बहुत सपोर्टिव है। जो मैंने चाहा है, जो पढ़ना चाहा है, जो करना चाहा है, दे ऑलवेज सपोर्ट मी। टीचर ने हमको बताया कि आप सिर्फ जनरली पेन से ही नहीं लिख सकते। व्हेन वी गो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये सोचा कि ये किस पर्पस से ये मशीनरी है और हम क्या करने वाले हैं इससे। देयर वाज अ कीबोर्ड, अ माउस, अ स्क्रीन, अ सीपीयू। जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें सीक्वेंस में नहीं होते कि मैं कैसे अपना नाम लिखूं, बिकॉज द फर्स्ट थिंग इन माई माइंड कि मुझे क्या करना है टाइपिंग में, दैट इज़ माई नेम। क्लास ओवर हुआ, घर पहुंचे, वेरी एक्साइटेड, एंटर भी नहीं करते थे घर में, गेट पर ही मॉम हमने आज ये किया, मम्मी आज ये हुआ, स्कूल में आज वो हुआ, सब चीज़ें। पेरेंट्स कभी कभी बहुत ज़्यादा डांटने लगते थे कि क्या आपको कुछ और काम नहीं है, ये है वो है। फर्स्ट टाइम मैंने यहीं पर ज्वाइन किया था एज अ टीचर प्रोफेशन, उससे पहले एज एम स्टूडेंट। PC penetration in India is still in single digits, 9 or 10%. In a country of 1.2 billion, 50% of the population is under the age of 25. India is touted to be the world's youngest country by 2020. How do you prepare a country which is so full of opportunity? How do you really make them future ready for a digital economy going forward? While there are metros and cities where kids get fairly good exposure to PCs during their learning years, a biggest challenge that we've noticed in the smaller towns is the access to PCs in your schooling years is literally nil. You have one set of audience who is growing up with PCs, and then you have another set of audience who hardly get to access a PC, leave alone them using it in learning. The biggest challenge that the country faces today in terms of education is reaching out to 250 million children. That's a huge number. Physically, to reach out to everyone, to engage every child is quite a task. I think technology will play an extremely important role. What have been the barriers which is stopping consumers from buying a PC? It's not that I cannot afford to buy a PC in terms of its sheer cost. Yes, they're probably being able to see the utility of a washing machine or the utility of a smartphone versus what is the utility of a PC, or what will I do with it? My family doesn't need one. It is about opening up a huge conversation with them. It's just the beginning of that conversation, and hence the project, we chose the name Arambh for it, which really in Hindi means the beginning. Who better than students in their formative years to start influencing them, giving them access to PC so they are ready for the digital economy. So that's what we intend to do as a program, with students being the core audience, and that's where we believe the schools, the teachers and the parents play a very important role in influencing how the child grows up. मैं जो जानती हूँ अगर मैं वो किसी और को बता रही हूँ, दैट्स अ बेस्ट पार्ट। और ऐसा नहीं है कि मुझे ही सिखाना है, नहीं, स्टूडेंट्स से खुद भी सीखना होता है। टीचर का होने का मतलब ये नहीं है कि बस टीचर को ही सब कुछ पता है। कंप्यूटर चूज़ करने का सबसे बड़ा पर्पज़ ये था कि मैं स्टूडेंट्स को हायर लेवल्स की सोच दे सकूं कि आप लोग किस तरीके से एक ऐसी चीज़ जब हमें बताई जाती है, सिखाई जाती है कि हम रेगुलर टीचिंग से हटके कुछ कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं अपनी टीचिंग में। सो ऑब्वियस सी बात है, इट्स इफेक्ट मच। Over a time period of 2 hours, we start off by introducing a PC to the teachers, how a PC works, how you switch it on. We actually give the PCs to the teachers and encourage them to come and do whatever they feel like with it. And we also demonstrate to them education content loaded on that, because as teachers, that's the content that they go through in their day-to-day life. Imagine the expressions they have when they actually see a lesson in textbook and them seeing that on a PC in a whole new audio-visual way. बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक हमें ऐसा सेशन बताया जा रहा है जहाँ पे हम अपनी टीचिंग को बहुत ज़्यादा एलैबोरेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। स्टूडेंट्स भी वो हमेशा ब्लैक बोर्ड से नोट डाउन करना, हमेशा वही बुक्स में नोट डाउन करना, बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, आई नो कि बुक्स से पढ़ना बहुत बोरिंग होता है। कभी कभी बुक्स पढ़ा रहे हैं, बच्चे बोलते हैं नो मैम आज नहीं पढ़ना है।
साइंस के पर्पस से देखते हैं, जो थ्योरेटिकली इतना इंडक्ट नहीं होता है स्टूडेंट से, अगर हम प्रैक्टिकली उसे समझा सकें। As a teacher, once you start believing that yes, it is a great tool for in the space of education, that is where they would be able to influence the parents. As the next rollout of the program, RM will reach to the parents directly. We have custom-built content to go to them, speak to them on why a PC for education and homes. She's able to teach her kids after school. She can play a role in their studies. दे रहे हैं, अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं, मदर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं और टीचर्स को भी ट्रेन करेंगे। ये कहीं ना कहीं जाके बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट वाला होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ पार्ट टीचर्स प्ले करते हैं, स्टूडेंट की लाइफ में टीचर्स प्ले करते हैं, साथ के साथ मदर्स भी प्ले करते हैं। अगर दोनों जगह अभी स्कूल में जो बच्चा सीखता है और वो कंटिन्यू घर में भी उस प्रोसेस को अगर घर में भी कंटिन्यू कर रहा है, तो वो उसकी फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिट होगा। मेरे घर में कंप्यूटर है और मेरे हस्बैंड उसे हर रोज़ काम के लिए यूज़ करते हैं। लाइक मेरे भाई जो कि लंदन में हैं, उनसे बात करने के लिए स्काइप पे। तो मैं यहाँ आई, मैंने ये ट्रेनिंग ली। उसको सुनने के बाद एक चीज़ जो मुझे सच में लगी कि मुझे कंप्यूटर एज अ किड मुझे भी सीखना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ आके फिर से वही लगा जैसे हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, और मुझे खुद, और जैसा मुझे पता चला कि ईमेल भेजना या कहीं डॉक्यूमेंट भेजना, बिकॉज मैं ऐसा कोई ऑफिस वर्क करती नहीं हूँ, तो इट्स नॉट दैट नीडेड, बट मुझे प्रोसेस पता होना चाहिए। एग्री करती हूँ कि बच्चों का जो पढ़ाने का जो तरीका है, और मुझे बहुत हेल्प मिलेगी अगर मैं कंप्यूटर को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करती हूँ बच्चों के साथ। डेफिनेटली मेरे बेटा तो बहुत एक्साइटेड होगा अगर मैं कंप्यूटर को इन्वॉल्व करके उसे पढ़ाती हूँ तो। In the last 2 years, there has been tremendous amount of importance and focus by the government on promoting the use of technology in society at large. The Digital India program was envisaged to transform India into a digitally empowered society and a knowledge economy. Most initiatives being driven by the government are using smartphones. It is not necessary that you start equating digital literacy, digital economy only to phones. There's 10% of the country which is contributing to a lot of IT content across the world. Now think about it that 90% of them are not involved in this. Just imagine the amount of potential that can be harnessed. And therefore our attempt is to go and complement the government initiatives, but to stay focused on personal computers. It's never possible for government alone to be able to complete this task. And we welcome and work along with partners like Dell in trying to fulfill this mission. And this program of Dell is going to create a level of awareness and education on how digital technologies can help people to improve their livelihood. In many cases, people just do not have the skills to engage in many of the activities where there are opportunities, be it linked to technology, be it as part of global value chains. So investing in skills is important. We've seen the role that information and communication technologies, for example, are having in enabling people to come up with new business ideas that are good for the people that innovate themselves, but are also improving the lives of people. बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी टेक्नोलॉजी से इतना कनेक्टेड नहीं है। उस कंडीशन में अगर हमें पता ही नहीं है हाउ टू यूज़ टेक्नोलॉजी, तो बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। बेसिकली आज के टाइम में हर फील्ड में कंप्यूटर नेसेसरी हो गया है, हर फील्ड में। देयर इज इन बैंक, इन स्कूल्स, इन एनी पोस्ट, अगर आप इन फ्यूचर। As a leading brand in the country, we have demonstrated the thought leadership, and we are the front runners in bringing about what I would say is not something that can be achieved overnight, but really is transformational mindset change. Imagine a child who's 10 or 12 years age today is taught everything on technology front or using technology. He or she gets into the workforce at the age of 21 or 22, and they start being productive. And that's when the potential of the country will get truly realized as a digital economy. I don't see this as a one-year journey. It's a multi-year journey, and we have a huge opportunity and potential to be
one of the leading countries in the globe. अभी छोटे छोटे हैं, वो आगे जाके हर चीज़ को फेस करने वाले हैं, टेक्नोलॉजी को ही फेस करने वाले हैं। सो अगर अभी से हम बचपन से ही, छोटे एज से ही बच्चों को इस चीज़ के बारे में स्ट्रॉन्ग बना देंगे तो इट डेफिनेटली हेल्प्स इन फ्यूचर। When you look at a digital Indian, you look at people who have truly used technology to not just elevate their individual situations, but who have used technology to transform this community and society and enable people to get employed. When we started off this journey of Aram, we intended to reach 5,000 schools across 75 cities, train and educate close to 100,000 teachers over a period of 12 months. 5 months into the program, we actually hit half mark, which means every single day across 17 cities, we were touching 300 teachers day in, day out. In a way, we want Aram as a program to create a digital revolution of sorts. मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट्स के साथ रहना, स्टूडेंट से कुछ चीज़ें सीखना, उन्हें कुछ चीज़ें बताना, उनके साथ हैंग आउट करना। मैं स्टूडेंट्स को बस ये थॉट देना चाहती हूँ कि बुक्स से हटकर कैसे आप हायर लेवल को चूज़ कर सकते हो। बस ये चीज़ सोच के मैं स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड रहती हूँ, तो इसीलिए शायद मैं फेवरेट हूँ स्टूडेंट्स की। मेरे को तो सब कुछ अच्छा लगता है। बच्चे भी अच्छे लगते हैं, पोती भी अच्छी लगती है, बेटे भी अच्छे लगते हैं, बेटी भी अच्छी लगती है, देवते भी अच्छे लगते हैं, सब अच्छे लगते हैं मेरे को। अच्छी मेहर कर रहे हैं मेरी। शादी ये भी 37 साल होगी, शादी में ही मिली थी, उससे पहले नहीं मिली कभी भी। जब लहंगे तो थे नहीं साड़ी पहनी थी, साड़ी अब नहीं पहनती, काफ़ी साल हो गए। मुझे अपने आप से ज़्यादा बच्चों से बहुत प्यार है, इसीलिए मैं एक टीचिंग लाइन में हूँ। छोटों बच्चे के साथ मैं जब भी जाती हूँ, बच्चों को मिलती हूँ, तो पूरा जो भी टेंशन रहता है घर का वो भूल जाती हूँ। और रात को 12 बजे उठा के भी अगर बोलेंगी इसको पढ़ाना है तो आई एम रेडी फॉर दैट। Indians typically from personal risk management are not one of the best. I find it very ironic because if you look at our culture, you will see a lot of us wearing these threads that's basically for protection. You'll see a lot of people going to prayers. However, when we talk about insuring ourselves, it somehow does not seem to be a risk management tool. भारत में रहने वाले लोगों को सबसे पहले तो सेविंग करने की बहुत अच्छी आदत है, लेकिन वो कब तक करते हैं जब तक कि अपने तक ही रखते हैं। जो भी रहेगा, लेडीज़ रहेंगी तो वो अपने घर में जो भी बचा हुआ पैसा रखेगी, और जेंट्स जो रहेंगे वो लोग बैंक तक कभी जाते ही नहीं है। Putting aside money for the future is pretty ingrained in a lot of us. If you have a little spare, as long as it is informal savings kept in cash at home, there is no guarantee that those savings can ever get accumulated. I'm 59 years old, or 59 years or young, whatever you say. Animal and dog lover. I'm an entrepreneur. I run a business. I am influenced by the Japanese in the sense I wear the same uniform as my workmen. Oh yeah, I'm an info junkie. I surf the internet late hours of the night or early hours of the morning. सबसे प्यार से रहते थे, कभी झगड़ा नहीं किया किसी से भी। अब भी खूब ख्याल रखते थे। आगे खाना खाया 8:30 बजे ही,
सो गए, मैं टीवी देख रही थी। 11:30 बजे उठे हुए, बोले मेरे को गैस बन रही है पेट में। तो गांव में एक डॉक्टर रहता, उसने टीका लगा दिया। आराम नहीं हुआ। मैं बोली भाई चलो ले चलो। वहाँ गाड़ी में लौटाए, फिर अड्डे पे पहुंचे थे। बस क्या हुआ, मेरी गोदी में लौटा हुआ था। मैं ऐसे सीट पे बैठी थी तो सिर रख रखा था मेरे गोद में। मैं इस बड़े आड़े बैठे थे। बोली मैं भाई देखी तेरे पापा तो बोल नहीं रहा, क्या बात हुई इसको। चले गए फिर। I had a very sudden accident disrupt my life. We never expected this sort of thing to happen to us, but it happened. When my son's body was still not cold, the police were telling us we will help you in all way for insurance. That time I was thinking, what will I do with money? One doesn't calculate in terms of profit with a loved one's life, because your son or daughter is supposed to look after you in your old age. Parents are not supposed to cremate or bury their children. But when it happens, it's a very sad thing. फिर भी बच्चे को भी डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, लेकिन सेकेंड ईयर की हम लोग फीस पे नहीं कर पाए। लेकिन सेकेंड ईयर आते ही मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ही बिगड़ गई। हम लोग ने उनको हॉस्पिटलाइज किया, थोड़ा मनी प्रॉब्लम हो गया। इवन उसके बाद में इसमें गुजर रहे थे। 50 to 60,000 रुपीज़ हम लोगों ने उनके हॉस्पिटल में बहुत खर्चा किया। हाँ मुश्किल तो है जी, एकदम तो सारी जिम्मेवारी गिर गई ऊपर। घर संभालना, बच्चा संभालना, पैसे का भी, जिंदगी का कोई भरोसा। खर्चा किस चीज में नहीं चाहिए, पैसे बगैर कुछ है ही नहीं। थोड़ा करा घना करा करना पड़ेगा। In India, a woman still is the one who actually manages home and hearth. She's the one who probably compromised on her career. And in case of the death of breadwinner, the family is left destitute. So the consequences of a lack of insurance are really not felt by a man as much as they're felt by a woman. सोच रहे होंगे दिल में, मार से तो नहीं बताई जी कि मैं नहीं रहूँगा तो तुम ये करियो या मत करियो, कुछ नहीं कहा उन्होंने हमारे। बस ये बताया था कि मैंने पॉलिसी करवा रखी, तुम्हारा भी गुजारा हो जाएगा। कहीं हुआ तो नहीं है, जो खर्चे के लिए पैसे चाहिए। इंश्योरेंस निकालना, जैसे कि आज हम लोग सोचते हैं कि सब लोग एक यूनिट ही है 15 लोगों की, अगर सब लोग 100 रुपये निकालते हैं तो कोई एक आदमी को वो मदद कर सकते हैं, वो 15 में से ही। Perception. That I think for me is the single biggest problem. How do people perceive life insurance and the investment in life insurance? और इसका बेनिफिट लेने के लिए, इसका लाभ लेने के लिए हो सके उतना इन लिटरेचर या पुअर स्लम एरिया, वहाँ पे भी एडवर्टाइज करके उनको भी इस लाभ का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करना ज़रूरी है। स्कूल में हम कभी गए नहीं, हमारे गांव में स्कूल नहीं था। जब इतना कौन वो करता था, कोई नहीं करता था। The majority of the people are actually those without an organized employment. Entrepreneurs, we have a lot of them, small businessmen, retailers. It's not that they don't make a good living for themselves, but they do not know for sure where the money is going to be coming from. See, my workmen also have got insurance policies. They are much more poorer, but they have these insurance policies against which they can get loans. If they have made insurance premium, then their tax is not deducted. There are so many benefits. If I were to meet a young professional who would be indecisive, I would tell him you're being extremely foolish in not taking insurance. Maybe something happens to him, his widow will get the money. His children will not suffer. To that extent, it's very important to have these policies. It's very easy for people to forget the impact that they make. Oh, I'm just entering data. No, you're registering a claim. I just issue checks. There's somebody out there who gets that credit in his account and is blessing you for it. हमने अच्छा लगा, थोड़ी मदद मिली,
तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं तो अपना वो करवा लूँ, मेरे जाने के बाद बच्चों के काम आ जाए। We do a lot of technology development. It meets our core needs of wanting to improve productivity at optimal cost. And that does not mean losing jobs. That means people who can think actually go on to doing things that add value and not do things that a machine can do. The entire sales process is paperless. So we don't have physical application forms, we have tabs. All the customer information goes into the tab and the process is seamless and the customer experience is wow. A lot of insurance companies would have certain legs of this, but no insurance company would pretty much have digitization of the entire sales process. For a company our size and our age, because of the right focus that we've had, we have actually insured, if I just take it on a cumulative basis, over 10 million lives. We've paid claims in excess of about 400 crores. When we use the word securing lives, we realize that that's our core business. But you create value for all the stakeholders, because if the stakeholders, all of them, are not really benefiting, it will be a problem from a scalability and sustainability point of view. The business needs to continue. And for the business to continue, you will be helping the customers. I think there's a general realization that to meet the development challenges, businesses will have to play a critical role. And so there are, I think, three dimensions to the role that businesses can play. The first is as a means of generating income. The second dimension has to do with businesses as suppliers of goods and services that are essential for people's lives, for people's well-being. And the third is the role of businesses as a source of innovation. Every human being has needs, and those needs need to be fulfilled whether you are alive or not. Most people believe that life is uncertain, but the reality is, or the fact of the matter is, that everything about life is certain. You are going to grow up, you are going to need a good education, you are going to get married, you are going to retire, and if you know that these events are going to take place, you might as well plan for them. Insurance is so simple, but it's been explained in such a complex manner, and it's been explained with such negative connotation. But if I was to turn it around and say, for those who are devolved, you leave home without just going to your alcoves where you keep your gods and just doing a quick namaste to him, and you walk out, there's always that niggling done. Can insurance become that backbone and that habit that if you don't have it, you actually feel that niggling sense of something is not done? जिंदगी किसी की, कोई किसी के हाथ नहीं। उनको भी ये नहीं पता था कि मैं आज चला जाऊंगा। आते कितनी खुशी होती है, जाते जो कितनी गमी होती है, क्या करें। When you face some sudden disruption to your life, life insurance is very important, very, very important. Nobody knows when they will go. It's really the remote control is with God. Life insurance in that way is extremely essential. उनकी कमी हमें बहुत खल रही है। कहीं ना कहीं उन्होंने ये इतना बड़ा एक बेनिफिट मेरे लिए छोड़ के गए हैं, जिससे कि मेरे बच्चों की एजुकेशन फ़ी निकालने के लिए मुझे कोई टेंशन ना हो। उनको याद कर करके आज हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं।